We are ready, my king. Tell me, the Nekis. Have you ever gone fishing with your son? No, never. A soldier's life is all I've had the honor to know. I would have liked to have gone fishing with my son. But now... Let us meet our fate, shall we? Spartans! Every breath that you have taken has led you to this moment. Every drop of blood, sweat, and tear, all of it has led to where you stand right now. The Persians come to make slaves of us all. I have a better idea. I say we drench the gods with their blood! What say you, Spartans? For our sons! For our daughters! For Sparta!
Puny Spartan! I'll bring Xerxes your head! Xerxes sends his sheep to slaughter. Come, Persian! I will bring Xerxes your head, you insolent Spartan fool! Come and get it! Your bloodline ends today, Spartan! I'll get drunk on your blood as the crows feed on your eyes! You will try, and you will fail! Xerxes is the king of kings! All will bow before him after I crush you! Come! Enough talk! Time to die! My son is more of a warrior than you! Once I'm done with you, king, all of Sparta's sons will be slaves for Xerxes! Sparta's sons would rather die! No match for a Spartan! We are betrayed, my king. Xerxes knows of the path behind the mountain. They're coming. By dawn, you will be completely surrounded. We are Spartans. When are we not? Spartans. That word will mean nothing when Xerxes wipes your bloodline from the face of... Today was a day the Persians will never forget. Tomorrow is a day the world will remember. Finally. Wow, this is big, Layla. Did you really think it's the spear? This is the one. The book was almost right on top of it. I've never been so lucky in my life. Okay, let's start her up. Are you sure we can trust this thing? I mean, the book could be... Just started, Victoria. You're the boss. I'll prep it for you. Okay, so worth noting, I've made some changes since you were last in here. There's no keeping up with the tech industry these days. I can crank up the simulation to maximum sensory synchronization if you're up for it. Let's take this one step at a time. Understood.
If you're looking for something a little more intense, I can always adjust the settings for you later. This bit will let me know how much information will be fed to you during your time in the Animus. Give me as much information as you got. There's no way I'm going in there without some guidance. Glad to help. You can always change your mind later. Listen, Layla, before you go off, If this book is right, this spear, this story, it will change everything. you're putting a lot of faith in a fairly unreliable source. Historian or not, this guy wrote about magical objects and the will of the gods. He's not Homer. Herodotus was the first recorded historian, so there's a lot more truth in that text than you think. I mean, what better way is there of finding Isu artifacts than by trusting in the guy who claimed to meet an actual descendant? I know, but I need you to trust me. You could be right. This spear, this book, it could all be crap. But something tells me it isn't, and I'm certainly not gonna let Abstergo find out first. you're right. We haven't got much to lose anyway. There's just one small problem. What is it? This manuscript is in rough condition, to say the least. The DNA found on the spear has identified 2 different individuals. You're gonna have to pick which strand of DNA to pursue. The choice is yours. He will lead us down the right path, I'm sure. All right, boss. We're finally good to go. 431 BCE, here we come! The start of the Peloponnesian War. Good luck in there. No pressure or anything, but we're all depending on you. Abstergo isn't gonna win this time. If what the book says is true and we do actually find the artifact, the assassins will finally have a chance to rise again. You can do it! Oh, and Victoria? Read the book. It holds the secrets I won't be able to find on my own when I'm in there. Aye, aye, Captain. Arestitoni toro Idehira rositos tolmondas Efcardios dos copir Ton svon Pagalenise Ionikitas benfixilionis Hey! Shitface! Get down here! Cyclops got a message for you. Tell your boss he can stick it. That's for last week! Malaka! The Cyclops said you like to act tough, so act tough! Get a little closer and I will. You should know by now. The Cyclops always collects his debts. You have a lesson to learn. If the Cyclops wants to teach me, tell him to come here himself. Never mess with...
Last week? This shit happens every week. I can't keep doing this. Nah. Thanks for the warning. What happened to you? It's nothing, Phoebe. All taken care of now. The Cyclops again, huh? Hasn't he learned his lesson yet? Apparently not. Of course. Help yourself. You hungry too, Icarus? Do you think Zeus will bless me with an ego like he blessed you, Alexios? Maybe you could ask him for me. Phoebe. We've been over this. I know. He's just an eagle. So, what are you doing here? Oh, I almost forgot. Marcos is looking for you. What does that weasel want now? Don't know. He wants you to meet him at his new house. On his vineyard. Wait, what? A vineyard? Malaka! It's on the road to Sami. He says wine will make him rich. Well, I guess I owe Marcos a little visit. Thank you, Phoebe. I'll go tell Marcos you're coming. My head. Fun's over. Tell that one-eyed freak, if he sends you here again, I'm going to cut his other eye out and feed it to my bird. I'll see Marcos as soon as I'm dressed. I'll have to go up top to get dressed. Let's get this on.
Been terrorizing the local wildlife. अभी दिखाई दे रहा है एक आया आदमी। You're gonna die! ऐसा भिड़ ले रहा। खतरनाक मार रहा है, एसिस्टेंट फिट 3 के जैसे मार रहा था। अभी भी लैग हो रहा है। अभी भी लैग हो रहा है, ठीक चल रहा है। गियर इक्विप करने के लिए बोल रहा है, कैसे करें? अभी भी बट मेरे को तो यहाँ कोई लैग नहीं दिख रहा है। ठीक चल रहा है अभी। ब्रदरहुड वाला लैग तो नहीं होना चाहिए, लैग क्यों हो रहा है? सही में लैग हो रहा है। मेरे को तो नहीं लग रहा है, रुक तो देखने दो। हाँ लैग हो रहा है। स्टॉप लोको, स्टॉप रूटर। अभी चेक करना। अभी लैग नहीं होती क्या? यहाँ पे दिखा रहा है सो इट्स बिगन इक्विप द, क्या बोल रहा है? इक्विप योर गियर। कहाँ से इक्विप करे, कैसे इक्विप करे? इन्वेंट्री में गया, क्विक सेव। अच्छा यहाँ से क्विक सेव है, यहाँ पे गया।
ठीक है, तीर धनुष भी है, तीर नहीं है। ऐसा ऊपर जा करके कुबड़ा बन गया, उठेगा कैसे? अच्छा, खड़ा कैसे करें? खड़ा कैसे करें इसको? अच्छा, सर्कल से। इतना लेट में आएगा तो हो बोले। Slice you right open. That's what I get for sparing you. No manners. मार तो मस्त रहा। Guess this is the vineyard. Straight ahead. पोलिनिया आइसलैंड जगह का नाम है। ये किधर इधर जाती? बारह सिंह का सिंह वाला आदमी से भाग जाता है। मेन मिशन किधर है हमको नहीं पता।
आ गया लगता है मेन मिशन। चप्पल पहना कि नहीं? हाँ। ज़्यादा लोड पड़ जा रहा था ना, इसीलिए चलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, मतलब रूटर और इस पे। तो अभी उन लोगों को हटा दिए। या फिर इसका वजह से हो रहा होगा। I entreat you, send. इसका वजह से बोला जाए तो डाउनलोड हो ही रहा है, धीरे धीरे करके डाउनलोड ले रहा है, क्या कि गेम भी खेल रहा है ना। गेम खेल रहा है कि A champion, someone worthy of your mighty spear. Help your priestess in her hour of need. You called? Oh, Alexius, you startled me. Why are you looking for a champion? I need someone worthy to win the Spear of Cephalus. I've been deciphering some of the sanctuary's stone carvings. They say the spear was hidden in the caves beneath Kefalonia when the temple was built. You could get it for me, couldn't you? I can give you a reward. Okay, I'll find it. If the spear is in the caves, I'll find it. Well, maybe you were sent by Cephalus. Cephalus. Why do you need a spear? Not thinking of becoming a soldier, are you? Of course not. But think how many people will come to the shrine if we have the Spear of Cephalus. With their donations, I could do so many things. Repair the sanctuary, feed the hungry families in Sami. Okay. So where is this spear? Apparently, it's hidden deep in the caves beneath Kefalonia. There's an entrance north of here. Maybe you can try that way first. That's not much to go on. You have so little faith in the gods. If Cephalus means for us to have the spear, you will find it. I'll see what I can find. Oh, thank you. I'll prepare a spot in the sanctuary. Quest. ये कैसे करे, इसको ट्रैक कैसे करे? इक्विप योर गियर। पहला जो इन्वेंट्री में तो दिखा रहा है। अच्छा, ये सब हो गया ना? हाँ, ऐसे सिंक्रोनाइज करेंगे। ऊपर चढ़ के ऐसे करेगा। अरे ऐसे कहीं भी चढ़ जाएगा।
और ऊपर चढ़ना का? पकड़ने का तो कुछ दिख रहा नहीं है, कहाँ पकड़ के चढ़ रहा? अरे अरे आराम से, उसका सर में चढ़ना। वो तो ठीक है, लेकिन मिशन कहाँ से स्टार्ट होता है? ओहो, 245 मीटर। क्या मार्कोस ब्रॉट न्यू वाइन यार्ड ऑन। नाम है बहुत अजीब है, पोलियनिया। क्या दिखा रहा है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे कुछ है। ये हो रहा है। There you are. Let's see what you've gotten yourself into this time, Mark. यहाँ पे जाना था। Boss, I keep telling you can't do that. Why? It's my farm. I can plant what I want. The grapes will die here. All of them. You have to forget what you know about the तेरा past. चैनल में व्यूज क्यों नहीं आ रहा? रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि सब्सक्राइबर उतना नहीं है, ठीक है? सब्सक्राइबर देखने से इम्प्रेशन बढ़ता है। तो 4 जन में से तू 3 जन तो हम हैं, 3 जन ही, 2 आदमी हम हैं, तीसरा तुम है, चौथा एक बंदा है। तो जितना ज्यादा देखेगा उतना इम्प्रेशन बनता है। अगर ज्यादा 40-50 सब्सक्राइबर में भी हम करते तो उसमें से 20 या 10 जन भी देखता तो फील्ड में जाता, इम्प्रेशन बनता है। I'm a fast learner. You grow grapes on the vine, then you get some wine. Oh, it's that simple, is it? You know me better than to think I don't have a plan. Marcos always has a plan. All right. Then do you have the money you owe me? Do I have the money I owe you? Of course, of course. माइकल वाला वीडियो नहीं पता चल रहा क्या Well, no, बनाया? not at the moment. Then get it. Instantly, my friend, instantly. But scripting नहीं maybe हो रहा। you should do that. There is a merchant in Sami. I'm not very good at these things, as you know. You want me to collect my own debt?
It's just waiting for you and Sammy, my friend. Who's the merchant? Dhuris. You know Dhuris. He's very nice. Dhuris? How stupid can you get? Stop giving him money. He always pays me back. After I threaten him? Exactly. Everybody benefits. Dhuris gets his money, I get my interest, and you have work. Kefalonia is wonderful, is it not? Kefalonia. He'd better have my money, Marcos. I'd hate to have to sell our vineyard. Of course he will. Oh, after there's another matter I want to discuss with you. After. Fine, but I'm taking a horse. It's too hot and too long a walk to go on foot. But... Think of it as interest, Marcos. Everybody benefits. Of course, my friend. You shall have your pick. You shall have your pick. I'm ready to choose. I've made my choice. Which one will it be? कौन सा लेगा? Middle वाला ठीक है. I'll take the one in the middle. Fine choice. But this particular breed has a few quirks that you might not be aware of. I wouldn't want you to take an unworthy horse. This is the one I want. Are you sure? Because... I'm sure, Marcos. Everybody benefits, especially you. You've chosen the great Phobos. He's never let me down. Phobos. Remember, meet me at the temple in Sami when you have your money from Dhuris. Ah, Efterpi. There's plenty of wine left to buy. Don't fret. Not now, you fool. Phoebe's been taken. By who? Thugs of the Cyclops. Who else? Snatched her right off the main road. Tell me where they went. In the direction of Itimena Beach. The beach? Can she swim? I'll get her. Yes, go. But don't forget about dear Dhuris, Alexios. Dear Dhuris, Alexios. Follow the road. Come on. Come on, come on. Ella. इधर जाना था. Yeah. ओहो, केव यहाँ पे है ना. Come on. Yeah! भूलिया बोली थी केव के अंदर. Come on. हॉगवर्ड लेगेसी नहीं खत्म किया. उसमें अभी झाड़ू उड़ाएंगे हॉगवर्ड में. You don't look so good. झाड़ू उड़ाने वाला younger them, I think. The gods. हॉगवर्ड्स खेलना चाहिए क्या? Time to... Uh-oh. Murder or impiety? Neither. I used to worship Hermes at the Drogorati cave. There are gods there too, you know. In the cave? They grant wishes if you bring them tribute. So everyone makes an offering and asks for something in return. Ah, no wishes of mine granted though. I'm running out of money and tribute. I'm poor myself, you know. I did something wrong. You know Hermes, he can be a trickster. Oh, but there are many gods in this cave, all asking for different things. Go hear them yourself. You'll get my last tribute if you do. I need to know if they're real. Okay, I will go there. Go these boots. All right, don't worry. I'll go. Oh, thank you. Remember, be careful where you step, Mistios. You'll be walking on holy.
असिस्टेंट क्रीड ओडिसी के नाम पे हॉगवर्ट्स खेलते हुए चलेगा। पोर्ट की गेम हॉगवर्ट्स, लेकिन बढ़िया गेम है, खत्म करना चाहिए हमको। हैरी द पुत्र का गेम खेलने से पहले पढ़ो बोलता है। ओडिसी में बेटा कौन सा है मेरा वाला? ये वाला था ना, 1 फरवरी को लास्ट खेला था। हाँ कंटिन्यू करो। अभी तो नया अलमारी बनाने सीखा है, इसमें लेबोरेटरी वगैरह सब खुला है इसलिए। मैं भूल गया क्या? Deke hasn't seen this many plants here before. ले लेना पैसा आएगा तो। इसलिए ना लेना है, ले लेना। Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. पत्ता गोभी तो उगाना, मेरे को पत्ता गोभी बहुत काम का। एस्ट्रोनॉमी टावर 75 के लगेगा। हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला पीसी की नॉर्मल वाला। लेना लेटेस्ट वाला माल जब आएगा तो बैटरी भी तो लग चार्ज ही नहीं होगी जल्दी।
देखो कार्टून लोगों को देखो यार। I'd make a fine keeper. Hello there. Perhaps you can help me. बाद में हेल्प करना। अच्छा एक दरवाजा। I was hoping to see you. Professor Fig. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes. I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toast. Why would you want to take toast? To a cave under the lake. That's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. The room is called the Map Chamber, by the way. And the portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to... How did this Jackdaw get the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Travel is always much more enjoyable with a friend. To think it was beneath us all this time. एक मिनट रुका जाए। चार घंटा इतना टाइम कहाँ है रे? फीफा डाउनलोड हो जाता, फीफा खेलते हैं करो। This looks promising.
map, there's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. I believe I have. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going. यहीं से वापस जाना ना। It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation.
But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Freezing spell. Talent कहाँ है? Talent. Stealth, dark art. क्या खोलेगा? Purchase है. Spells. Outpost.
उनके लास्ट जर्नी में उनका मेंशन होता है, बहुत प्रोमिनेंट है। और वो बैठे बिठाए महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। भगवान का उपस्थात बन सकता हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। एक शर्त कि भगवान, कोई यदि आमंत्रण मेरे पास आए और मैं उस आमंत्रण को स्वीकार करूं तो उस आमंत्रण को आप स्वीकार करें, वरना मेरी कौन सी। भगवान ने कहा ठीक है, मैं स्वीकार करती हूँ। और एक, आप अपने भोजन में से मुझे भोजन नहीं देंगे। क्यों? जाहिर सी बात है, ताकि और भिक्षु ये ना सोचें कि आनंद ने ये काम इसलिए चुना है कि आनंद को अच्छा भोजन है। आप मुझे जहाँ हर जगह आपको आमंत्रण मिलता है वहाँ नहीं ले जाएंगे, ताकि और लोग ये ना सोचें कि आनंद ने ये काम इसलिए स्वीकार किया है कि आनंद भगवान के साथ भोजन किए। आप मुझे श्रेष्ठ चिवर, अच्छा चिवर चुनकर नहीं देंगे। मैं जो वस्त्र भिक्षा मांगकर ले आऊँगा मैं वही पहनूंगा। तो इतनी सुंदर कथा है कि एक चचेरा भाई अपने भाई का उपस्थात रहता है और जीवन का उसको कोई मोह नहीं है। वो कितनी शर्तें भगवान के साथ रखता है कि किसी के मन में कभी ये ईर्ष्या न हो कि मैंने ये लाभ के लिए। बुद्ध की जीवन यात्रा का फल गंगा की मध्य और निचली घाटी के इलाकों से होते हुए मिथिला और नेपाल की तराई तक फैला हुआ। वे लगातार घूमते हुए ज्ञान बांटा करते थे, सिवाय चातुर्मास या वर्षा ऋतु की, जिसे बुद्ध का वर्षावास कहा जाता है। वैशाली की बाहरी सीमा पर बसे बेलुआ गांव का वर्षावास बुद्ध की अंतिम यात्रा का प्रस्थान बिंदु साबित होता है। यात्रा अब तक निष्कंटक चलेगी, पर काल को आगामी आहट का आभास भी तो देना। बुद्ध बीमार पड़ गए। उनके शिष्यों ने काल की इस कुंडी की ध्वनि नहीं सुनी। बुद्ध मुस्कुराए, अपनी संकल्प शक्ति से अपने को स्वस्थ किया और अगले पड़ाव चपाल चैत्य पहुंच गए। बुद्ध जानते थे उनका जाना इस दुनिया और विशेषकर उनके शिष्यों के लिए एक सदमा होगा, पर यदि आगत की पूर्व सूचना दे दी जाए तो वे बचे हुए समय में अपने को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार कर पाएंगे। बुद्ध समझ गए थे कि महापरिनिर्वाण की घोषणा का सही समय आ गया। उन्होंने अपने अभिन्न शिष्य आनंद को याद किया। आनंद बुद्ध के साथ 2.5 दशक से वे बुद्ध के इतने निकट हैं कि अक्सर उनकी बात कहने से पहले समझ जाते हैं। तो बुद्ध ने आनंद को बुलाया। बुद्ध उनसे कहते हैं, तुम बोलो तो मैं इस धरती पर तब तक रह सकता हूँ जब तक ये धरती रहे। बुद्ध की बात बोलने से पहले समझ जाने वाला आनंद आज बोलने के बाद भी नहीं समझ पाता। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि बुद्ध ने आनंद की बात की तो वो स्वयं कहते हैं कि मैं चाहूँ तो अनंत काल तक जी सकता। भगवान का यह तात्पर्य धम्म से कि हम अक्सर व्यक्तियों को स्वीकार करते हैं, उनके विचारों को छोड़ देते हैं। यहाँ तथागत ने स्पष्ट कर दिया है कि बुद्ध से बड़ा बुद्ध का विचार है, धम्म है। तो जिस अनंत काल तक की बात हो रही है वह धम्म के संदर्भ में आनंद उस बात को कंप्रीहेंड नहीं कर पाते हैं और वो इग्नोरेंट रहते हैं। बुद्ध repeated this for 3 times. But Ananda did not say anything in favor of Gautam Buddha to continue till the end of this world. बुद्ध अपना सवाल दोहराते हैं, चिढ़ाते हैं, पर आनंद की तंत्रा नहीं टूटती। बुद्ध उन्हें मुस्कुराते हुए बाहर भेज देते हैं। ये समय इस यात्रा के लिए अगला कदम उठाने लगा। बुद्ध अपनी गुफा में साधनारत हो गए। उन्हें महापरिनिर्वाण का निर्णय लेना है, लेकिन उन्हें इस जगत की भी चिंता करनी है। साधना के बीच महापरिनिर्वाण के हाँ ना का तर्क वितर्क चल रहा है और यहाँ आता है बुद्ध का बहुत पुराना साथी मारा। एक मिनट, मारा को मैंने बुद्ध का साथी क्यों कहा? क्योंकि मारा तब भी साथ था जब बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए भटक रहे। थेरवाद में मारा वही है
कामदेव, भीतर की लालसा साथी तो रहती है, उफन कर बाहर आकर हमें वश में करने को आतुर तो रहती है, तो साथी ही हुआ ना। मारा बुद्ध को निर्वाण पाने से पहले भी घटता है, पर बुद्ध मारा पर विजय पाते हैं और निर्वाण प्राप्त करते हैं। अब मारा को पता है कि वो बुद्ध पर विजय पा नहीं सकता। मारा यहाँ दूसरा रास्ता अपनाता है। विनती है, बुद्ध की तपस्या किस हद तक है कि मारा को भी उनसे प्रार्थना करनी पड़ती है कि अब तो आप अपना परिनिर्वाण प्राप्त कर लो। Don't trouble yourself, that I will enter Nirvana anyway. It's in my hand. I know I can see through. And I know what pure intentions are behind troubling me and prompting me and pushing me towards that state. In Buddha's absence, his words, his teaching should be their guiding light. At the same time, he needs to address the people and the Sangha in a structured way. Buddha himself said, if I take Mahaparinirvana now, that will not be the justice to the monks, because it is my duty that before leaving this world, I should give my last dashana, last message to them. शरीर जरा, ये इसका क्षय होगा, इसका उनको ज्ञान है। ये शरीर मेरा साथ नहीं देगा। 80 वर्ष तक इस शरीर ने इसका साथ दिया है और उसे जानना है, इसका क्षय होगा, क्षरण होगा। He ultimately said to Mara that okay, don't worry, within 3 months I will be accepting Mahaparinirvana. मारा खुश, उसने बुद्ध को महापरिनिर्वाण के लिए राजी कर लिया और इसकी आनंद के सामने घोषणा भी करा ली। बुद्ध नहीं होंगे तो मारा के लोभ लालसा का बोलबाला रहेगा। लोग ज्ञान कर्म से ज्यादा भोग की ओर परिणत होंगे, पर मारा बुद्ध के एक और नियम को जानता नहीं। बुद्ध अपने नहीं रहने की आगामी स्थिति में अपने ज्ञान को विस्तार देने के लिए अपने अवशेषों के सुरक्षित संग्रह और जनमानस के लिए इसके दर्शन की व्यवस्था कराने का निर्णय ले चुके हैं। कपाल क्षेत्र में अपने महापरिनिर्वाण की घोषणा कर बुद्ध अपने भिक्षुओं की टोली के आगे बढ़कर एक पल के लिए वैशाली को खड़क कर निहारते और फिर आनंद से कहते हैं, हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। पश्चिम जिधर सूर्य अस्त होता है। वैशाली को मैं अब कभी नहीं भूल पाऊंगा। असल में बुद्ध के महापरिनिर्वाण लेने के निर्णय की बात वैशाली में फैल गई थी। उन्हें लगा वे फिर कभी बुद्ध को देख नहीं पाएंगे। पूरा शहर बुद्ध की इस अंतिम यात्रा में उनके पीछे चल पड़ा। लोगों की इस विशाल हुजूम के साथ चलना संभव तो नहीं था। बुद्ध लोगों को लौटने के लिए कहते हैं, पर लोग उनके महापरिनिर्वाण की बात से इतने दुखी हैं कि वे लौटने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में बुद्ध उन्हें अपनी एक निशानी देते हैं, अपना भिक्षा पात्र। जहां पर यह घटना हुई थी, आज भी वहां पर एक स्तूप मिलता है। और ये स्तूप कोई छोटा मोटा मामूली स्तूप नहीं है। ये अब तक मिले दुनिया भर के तमाम स्तूपों में सबसे विशाल स्तूपों में से एक है। ऐसा कहा जाता है बुद्ध का वो भिक्षा पात्र उस स्तूप के अंदर अब भी सुरक्षित है।
पात्र है वह 45 वर्ष तक उनके पास था। ये कल्पना करना कि एक ही पात्र, उसी पात्र में उन्होंने भिक्षा की। आज हम मिट्टी का एक पात्र हम अपने घरों में जो चाय का प्याला होता है उससे कुछ दिनों पर गिरा देते हैं या टूट जाता है, यानी कि वो भूमि पर भी रखते होंगे, धरा पर जमीन पर भी रखते होंगे तो अवेयरनेस जो विपश्यना करते हैं कि एक सांस के साथ बगैर, तो ऐसी तपस्या, ऐसा अवेयरनेस कि वो पात्र कभी उनके हाथ से गिरा नहीं। अब ये तो तय है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण होगा और इस 3 महीने में ही होगा, लेकिन उसका निमित्त कौन बनेगा? बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली से विदा ले चुके हैं।